Hello, Assalamu alaikum. Today we will see lecture number 24 from the subject design and analysis of an algorithms. In the last lecture, we talked about dynamic programming and we also talked about how to find the short minimum cost using the traveling salesperson's problem. Today, the another problem which we have to do is all pair shortest path problem using dynamic programming. So let us do that. So say this is a graph and there are four vertices given to us, and this is a bidirectional graph. So if I would like to go from vertex 1 to 2, it would cost me 3. Similarly from back it would cost me 8, and likewise. Okay. So our problem is to find all pair shortest path problem. If I would like to go from 1 to 2, how much it would cost me. If I would like to go from 1 to 3, how much it would cost me. Likewise, but I have to do it for each and every vertex. In single source shortest path problem, there was a single source and every other vertex was considered as the destination vertex. But in this case, we have to see if I would like to go from 2 to anywhere, how much cost it would take. There is nothing like a source, nothing like a destination. We should just make sure what are the shortest paths between each other using the dynamic approach. Okay, so how to solve this problem? Firstly, we will convert this into the matrix. And the algorithm which we will use in order to solve this is the Floyd-Warshall's algorithm. Okay. First step is convert the graph into the matrix. There is no self loop, so all the diagonal elements will be equal to 0. 1, just to make it clear, 1 to 2 it is 3. 1 2 3, there is no direct path, so let it be equal to infinity. 1 to 4 it is a 7. 2 to 1 is an 8. 2 to 3 is a 2, and 2 to 4 there is no direct link, let that be equal to infinity. 3 to 1 is a 5. 3 to 2 there is no direct link, let it be infinity. 3 to 4 is 1. 4 to 2 4 to 2 okay, sorry, 4 to 1 it is a 2. 4 to 2, no direct link, no direct link. Okay, so this is the first matrix which we converted out of this. Now what we have to do is step number 1. In order to find the all pair shortest path by using the Floyd-Warshall's algorithm, by using the dynamic approach, these are the steps which we have to follow. So we will start from vertex number 1 so that we can solve this. Take vertex 1 as an intermediate vertex and keep the first row and first column as it is. Okay. So first matrix will be like this. We don't have to do anything with the first row and with the first column. So 0 3 infinity 7 8 5 and 2. Now हमें क्या करना है, वी हैव टू सी कि अगर मैं 2 से 2 तक जाऊंगी या 2 से ओबियसली 2 तक तो नहीं जा सकती क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं है. 2 से 3 तक जाने के लिए, 2 से 3 तक जाने के लिए नो डाउट देयर इज़ अ डायरेक्ट पाथ. क्या कोई और तरीका है 2 से 3 तक जाने के लिए ताकि मुझे कॉस्ट इससे कम लगे? ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वर्टेक्स 1 एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स. से फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट मैट्रिक्स से 2 to 3 तक जाना है. ठीक है. ओके, द कॉस्ट ऑफ
2 to 3 is 2. Okay, so we have to find the minimum of, ठीक है, दिस इज बेसिकली द वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. अच्छा, अब क्या बोलता है ये, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम 2 to 3, क्या कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स हम ले सकते हैं ताकि हम 2 से 3 तक जाएं. यस, देयर इज़ एन ऑप्शन दैट हम 2 से 1 तक जाएं, फिर 1 से 3 तक जाएं, या 1 से कहीं पे भी जाएं. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक वर्टेक्स नंबर 1 एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स बिटवीन दीज टू वर्टेक्सेस, लाइक दिस. ए ऑफ 2 नॉट 2 to 1 प्लस ए नॉट का 1 to 3. ठीक, शुड बी लेस देन 2 to 1 तक जाने के लिए द कॉस्ट इज 8 प्लस 1 to 3 तक जाने के लिए द कॉस्ट इज इन्फिनिटी. Obviously 2 is less than this. 8 plus infinity would be infinity or maybe more than that. Okay, we have to find the minimum. इन दोनों में से हमें मिनिमम ढूंढना है. दिस इज कॉमा मिनिमम. मिनिमम इज ऑब्वियसली 2, राइट. सो जो वैल्यू है हम वही लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आने वाली है. सो दिस विल बी अ 2 एज इट इज. ठीक है. बी, अब क्या करना है हमें, 2 to 4. मिनिमम ऑफ ए नॉट ऑफ 2 to 4 के बीच में एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स का हमने यूज़ किया है, दैट इज़ अ 1. सो 2 to 1 प्लस ए नॉट ऑफ 1 to 4. ठीक, 2 to 4 तक जाने के लिए द वैल्यू इज़ इन्फिनिटी. ओके, कामा वी हैव टू फाइंड द मिनिमम. यहाँ पे आप कामा लिख सकते हो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मिनिमम, सो इट्स नॉट नेसेसरी. 2 to 1 तक जाने के लिए द कॉस्ट इज़ 8 प्लस 1 to 4 तक जाने के लिए 1 to 4 तक जाने के लिए कॉस्ट इज़ 17. सो ओबियसली 7 प्लस 8 इज़ 15 कामा इन्फिनिटी. इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो है 15. सो हम यहाँ पे इस इन्फिनिटी के बदले यहाँ पे इसमें वैल्यू अपडेट करेंगे विद अ 15. ओके, तो हमने ये दो एलिमेंट्स को चेंज किया. नाउ वी विल शिफ्ट टू दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हमने ऐसे ही रखते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स को, वैसे डायगोनल एलिमेंट्स हमें चेंज नहीं करने हैं. डायगोनल एलिमेंट्स हमें चेंज नहीं करने हैं क्योंकि कोई भी सेल्फ लूप नहीं है. ठीक है. नाउ वी हैव टू चेंज दिस 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 एंड दिस. ओके, स्टेप नंबर 3. See, the minimum of 3 to 2 by taking the intermediate vertex as 1. हमें हमेशा यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 ही एज, क्योंकि हमने फर्स्ट वर्टेक्स से ही स्टार्ट किया. सो 3 से 1 तक जाने के लिए प्लस 1 से 2 तक जाने के लिए कितना है. सो अ मिनिमम ऑफ 3 to 2 तक जाने के लिए दिस इज इन्फिनिटी. 3 to 1 तक इज़ 5 प्लस 1 to 2 इज़ 3. सो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कामा 8. 8 इज़ द मिनिमम वैल्यू ओबियसली. ओके, सो हम यहाँ पे क्या है, इस इन्फिनिटी के बदले यहाँ पे हम 8 लिखेंगे. वी विल अपडेट दिस वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू 3 to 4, क्योंकि 3 to 3 सेल्फ लूप है नहीं तो वी विल लीव दैट. बाय टेकिंग वर्टेक्स नंबर 1 एज एन, हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ रखा. दैट इज़ द रीज़न वाई वी टेक वर्टेक्स नंबर 1 एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स. 3 to 1 प्लस द वैल्यू ऑफ 1 to 4 फ्रॉम द वर्टेक्स नंबर फ्रॉम द मैट्रिक्स A. मिनिमम ऑफ 3 to 4. 3 to 4 तक जाने के लिए द वैल्यू इज़ 1. 3 to 1 the value is 5 plus 1 to 4. 1 to 4 the value is 7. So the minimum of 1, 7 plus 5 is 12. Clearly 1 is the smallest value, so we will write 1 over here. यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई. Now हमारे पास बचता है 4 to 2 and 4 to 3. So the minimum of 4 to 2 by taking the vertex number 1 as an intermediate vertex. So 4 comma 1 plus
a naught of 1 comma 2. So the minimum of 4 to 2 is infinity, 4 to 1 is 2, 1 to 2 is 3. So minimum of infinity comma 5 is 5. So हम यहाँ पे जो है इसका जो वैल्यू है अपडेट करेंगे विद 5. ओके टी ए बी सी डी ई एंड एफ रिपीट क्यों हो गया मिनिमम ऑफ ए नॉट ऑफ 4 to 3. ओके comma. So a naught of 4 to 1 plus a naught of 1 to 3. So the minimum of 4 to 3 is infinity. 4 to 1 is 2 plus 1 to 3. 1 to 3 is an infinity. So obviously this there will be an infinity. So the minimum value we can take as infinity. So we will update this as an infinity. Okay. Okay. This is the first step. Now the second step is step number 2. Take vertex number 2 as an intermediate vertex and keep row second and column second as it is. बाकी सब में आप change ला सकते हो. Okay, but here we have to use the latest matrix now. Okay, we will write it. हमें क्या रखना है second row, that means 8 0 2 15 and second column that means 3 8 5 as it is. Now we have to change diagonal elements में कोई change नहीं आएगा, so we can put it like this. So we have to change rest of the elements. Over here a minimum of 1 to 3, a1 of 1 to 3 क्योंकि हमें यहाँ पे a1 मैट्रिक्स को कंसिडरेशन में लेना है, a2 को अपडेट करना है. 1 to 3 comma a1 of 1 to 2 plus a1 of 2 to 3 क्योंकि अब हमें 2 इसको मिडिल एलिमेंट रखना है. सो द मिनिमम ऑफ 1 to 3 is 1 to 3 is infinity. 1 to 2 is a 3 plus 2 to 3. 2 to 3 is a 2. So minimum obviously is a 5. So हम यहाँ पे 5 को अपडेट करेंगे. Similarly हमें बाकी के भी सारे एलिमेंट्स को अपडेट करना है. Similarly by updating all the elements of matrix A1 by keeping vertex 2 as an intermediate vertex, the final matrix would be like this. Please do it by yourself so that you will understand it. अब हर एक कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेती हूँ. दिस विल बी अ 7, दिस विल बी अ 5 1 2 and 7. Okay, so after this the third step would be step third में क्या करना है, take vertex 3 as an intermediate vertex and keep row third and column third as it is from the latest matrix, that means A2 matrix. So A3 will be third row, that means 5 8 0 1 5 2 and 7.
बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें अपडेट करना है, लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज़, क्योंकि उनमें कोई चेंज आएगा नहीं। सो 1 to 2 ऑब्वियसली 1 मिनिमम ऑफ एक सेकेंड A2 ऑफ 1 to 2 कामा A2 ऑफ, अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स हमें 3 रखना है तो 1 to 3 प्लस A2 ऑफ 3 to 2. Okay, so this will be a minimum of 1 to 2 from the second matrix is 3 comma 1 to 3 it is a 5, 3 to 2 it is an 8. So the minimum will be 8 plus 5 is 13. So the minimum is 3. So हम यहाँ पे 3 ही वापस लिखेंगे. Okay. ठीक. And similarly do for each and every element. I will write the updated matrix over here. So this will be a 5 and then 6. This will be a 7, 0, 2, 3. The last will be 2, 5, 7 and 0. Okay. After that, step number 4. Take vertex 4 as an intermediate vertex and keep row 4 and column 4 as it is. ये हमें तब तक करना है जितने हमारे पास वर्टिसेस नहीं होंगी. तो A4 जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि हमारे पास 4 ही वर्टिसेस हैं, तो क्या कहते हैं, 4th कॉलम और 4th रो को, जो करंट वाला है 4th रो इज 2, 5, 7, 0 को ऐसे ही रखो और 4th कॉलम को दैट मीन्स 6, 3 and 1. डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगी. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चेंज करो. कैसे? लाइक दिस. मिनिमम ऑफ A3 का 1 क्या चेंज करना है, पहले 1 से लेके 2 तक कामा. अब 1 से 2 तक तो चेंज करना है, हमें देखना है 1 से 2 तक का मिनिमम वैल्यू. नाउ द सेकेंड वैल्यू विल बी the intermediate value, that means 1 से 4 कामा प्लस 4 से 2. 1 से पहले 4 फिर 4 से 2 तक जाने के लिए द मिनिमम वैल्यू विल बी 1 to 2 तक का वैल्यू जो है दैट इज़ अ 3 कामा 1 से 4 तक जाने के लिए द वैल्यू इज़ 6 प्लस 4 से 2 तक जाने के लिए इज़ 5. सो द मिनिमम इज़ 3 कामा 11. ऑब्वियसली मिनिमम इज़ 3, सो हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे. सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स को जब आप अपडेट करेंगे इन द सेम वे, सो देयर विल बी अ 5, 0, 2 and 3. This will be a 3, 6, 0 and 1. This is how we have to solve this, and this is our final matrix. Why this is our final matrix? The reason is we are only having 4 vertices. मैंने यहाँ पे खुद ही इनको अपडेट किया था, ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल थी, लेकिन जब आप करेंगे मेक श्योर कि आप हर एक एग्जाम्पल को पहले स्टेप में मैंने जैसे हर एक चीज़ दिखाई आप वैसे के वैसे ही कर लेंगे. ओके. एल्गोरिथम फॉर दिस. So this is the formula. A of I comma j is equal to the minimum of A of k minus 1. This is how we basically update it. Comma A of k minus 1 I comma k plus A of k minus 1 k comma j. Here k is the intermediate vertex. Then we do it like this. For k is equal to 1, k is less than or equal to n, k plus plus. For I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. Then for j is equal to 1, j is less than or equal to n. Here n is the number of vertices. हमें तब तक जाना है जब तक कि हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे. Out of all this, we only take द मिनिमम वैल्यू. हम मैट्रिक्स में कौन सा वैल्यू डालते हैं? मिनिमम वैल्यू. आई कामा जे कामा ए ऑफ आई कामा के प्लस ए ऑफ के कामा जे. इसको यहाँ पे बंद कर लें तीनों चीज़ों को. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे जो तीनों के तीनों लूप्स है वो n तक चलते हैं. दैट मीन्स जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं ये उधर ही तक चलेगा
So the worst case time complexity will be big O of n cube. Thank you.